like? Which pen do you like? Which pen do you like? And what is something like, okay, it's a question which is you are asking for. Which car did you do you like? Toyota or Hyundai or Volkswagen? Which? So it is asking for an option. You should know these things. These are formulas. If you don't know these, let me tell you, it'll be way different, way difficult for you to actually frame sentences. So be sure in understanding these theories. Who versus whom? Who is the subject pronoun? Ye bhi. Who wants to go hiking this weekend? You should know that when to use who and when to use whom. Who is the man with a long beard? Right? So who has to answer, he or she? And whom will be? Whom? You have to know that, okay, when you have to use who and when you have to use whom. This has to be, whom did you give the book? Whom did you give the book? So one is who is basically receiving the action and whom is actually you are transferring the action to. Remember this, children. This is very important. So whenever you use who and whom, you should be very clear what it should go. क्योंकि तुम्हारे सेंटेंस करेक्शन में अंडरलाइन द सेंटेंस में वो ब्रैकेट में दिया होगा who/whom एंड दे विल आस्क यू who चाहिए वहां लिखना है या whom लिखना है. दोनों भी करेक्ट लगते हैं, बट मैंने जैसे आपको एक ट्रिक बताई है, एक्शन जिस पे होता है और एक्शन जो रिसीव करता है, ये दो में फर्क आपको समझ में आनी चाहिए. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड. We learned all this verbs, like all these verbs. Now we will be learning this auxiliary verbs. Very important part in your English. Auxiliary, right? We all learned transitive, intransitive. Transitive is something expresses doable activity. I am driving my car, right? So it is like transitive, it is transitioning, right? So something like this, regular, irregular, we have learned. Now let me put it to you. These things, ये सब हमने सॉल्व किए हैं, ये भी एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए हैं. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. वी लर्नड अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. मतलब हमने कहा अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल होगा नाउन या सब्जेक्ट तो आपको वर्ब भी प्लूरल रखना है. और ये हमने सीखे भी है. चलो अभी आते हैं, ये रिवीजन हुआ, हमने कितना पढ़ रखा था. अब हम करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चाइल्ड. Auxiliary verbs will help the main verb to express tenses. It will just help the main verb to express tenses, moods, or voices, and also add function and grammatical meaning in a sentence. It will just add a function or a grammatical meaning. It is also called modal auxiliary verbs or helping verbs. Now ये helping verbs जो होते हैं, ये कौन से हैं? नीचे कुछ आपको उदाहरण की तौर पे दे रखे हैं. ऑक्सिलरी वर्ब बी, डू, हैव, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट. अब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं. यू शुड नो व्हेन टू यूज विल, शैल, मे, माइट, क्योंकि यहां बहुत गड़बड़ कर जाते हैं बच्चे. और ये हम पढ़ने वाले भी है कि क्या डिफरेंस होता है ये हर एक में. विल में और शैल में क्या डिफरेंस होता है, विल में और वुड में क्या डिफरेंस होता है, वुड में और शुड में क्या होता है. और काफी जगह जब हमें सेंटेंस पूछते हैं कि आप सेंटेंस में वो पूछते हैं कि लाइक ओके प्लीज फिल इन द सेंटेंस, और वहां पे शैल, विल, वुड, कुड सब दिया रहेगा और आपको बोला जाएगा कि लाइक आप वहां पे फिल करना, फिल इन द ब्लैंक्स. और बच्चे अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं कि वो विल के जगह वुड लिख देते हैं, वुड के जगह शुड लिख देते हैं. उसमें क्या फर्क है वो भी हम सीखेंगे.
वो शायद आज नहीं हो पाएगी क्लास, वो नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे। अभी एक चीज आपने, जब आप आपके पापा के साथ मम्मा के साथ कार में जब घूमते हो, तो ऑक्स सुना है कभी? ऑक्स, AUX बच्चों, ऑक्स। आपका सामने कार में एक टेप होता है और टेप पे लिखा होता है, देखो, ऑक्स, ऑक्स केबल, सुना है? यस सर। पढ़ा है? आपके कार में आपके पापा आपकी मम्मी जब ड्राइव करती है आपको, आपने पढ़ा है ये आपके यस कार सर। के टेप रिकॉर्ड्स पे? ये क्या होता है? यस सर। एग्जैक्टली exactly. तो ये ऑक्स क्या है? इट इज समथिंग विच इज हेल्पिंग, हेल्पिंग द मेन। मेन मतलब वहां पे क्या होता है? ऑक्स। व्हाट इज द मेन इन दिस? वहां पे जो आपकी मेन, जो आपका बोर्ड होता है वहां पे, जो आपका डैशबोर्ड, वो डैशबोर्ड पे जो टेप रिकॉर्ड लगी रहती है, तो उसमें CD प्ले कर सकते हो आप, दूसरा प्ले कर सकते हो, जैसे आपके पेन ड्राइव से प्ले कर सकते हो। बट जैसे ही आप ऑक्स केबल लगा देते हो, इसका मतलब क्या होता है कि आप अन्य बहुत सारे सोर्सेस से, ये बहुत सारे सोर्सेस से आप क्या कर सकते हो? आपके गाने या मूवीज प्ले कर सकते हो। सो दिस इज ऑक्सिलरी, इट इज हेल्पिंग यू टू गेट कनेक्टेड टू द मेन। सो मेन हियर इज, in that car is your car tape, the main car tape. Now children, henceforth I would request you, ask your papa mamas to buy a earphone for you. If you are listening on a laptop, please put a earphone and listen. That is one request I'll do to I'll ask you to do. And please get these earphones, because now the class will slowly get deep in, where you need to really concentrate on, because I am on a virtual platform, or rather we are all on a virtual platform. I don't get to see your faces when I am putting my slides up here. तो उस कारणवश मुझे पता नहीं चलता है कि कितने बच्चे रियली सही मायने में सुन रहे हैं। ठीक है? सो मैं वो चाहूंगा कि आप पिन ड्रॉप से अभी ये पढ़ना, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस भी बताए जाएंगे। हमने हमने बहुत सारे वीडियो से भी पढ़ना है अभी। ठीक है? अभी ये बेसिक ऑक्सिलरी वर्ब्स, अभी ये 3 तरीके के होते हैं बेसिक ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिसे कहते हैं टू बी, टू डू, टू हैव। बस ये 3 में ही सारा खेल होता है। ठीक है? टू बी के ओके कुछ सर। एग्जांपल। हाँ, या somebody want to ask something? नो सर। Okay, please don't disturb the class, children, because there is a flow which gets disturbed. The basic auxiliary verbs are to be, to do, to have. Now, to be is am, is, are, was, were, being, will be. मतलब क्या है? ये क्या है? To be मतलब it is about you. Hello, sir, please mute. Please mute. Children, 1 minute. I'm getting a glass of water. Yes. Now, the basic auxiliary verbs are these 3 types: to be, to do, to have. Now, children, when we have to be, we are talking about is the be is you. Am, I am dancing. They, it's the noun में जो रहते हैं, they were, they was, there was, something like being, been. Can you mute? Somebody's mic is unmute. Please mute. Please mute the mic. Please mute the mic. सर, किसी का माइक खुला है? सत्येंद्र मोहन जी का है। सर, म्यूट करा दीजिए प्लीज। So to be, am, is, are, was, were, being, been, will be.
This is about your state. State. To do मतलब जिस पे कार्रवाई करते, जैसे he did, he does, will do. अब इसमें हम participles, past tense, future tense, we will learn so many tenses in this, so don't worry as we move forward. But this is to do and to have, has, had, having, will have, all of this. So these are the three types. Which are the three types? To be, that is your state. To do, correct. And to have. correct. Perfect, children. Now when we move ahead, To do, to have. correct, बच्चों. Now that there is a difference between in this to have, to, and one minute. Have you heard about gerunds and infinitives? Now, if you have not heard, let's learn. Now, this to have, to be, whatever we learned in the last slide. To have, to walk, to do, to dance, to jump, to walk, to drive, to laugh. It is talking about what? It is an action. जैसे हमने कहा कि verb is an action. It is an act. It is divided into two forms. One is the form of gerunds. What is a gerund? Gerund is a verb. Gerund is a verb form that ends in ing. What is ing form of a verb? Say like बच्चों आप walk कर रहे हो, so you are walking. आप पापा मम्मी के साथ कहीं घूमने गए हो, so you are like traveling, right? If somebody is gone, so whatever verb with ing form is your gerund. Remember this. Jumping. कोई example दे सकता है अभी तुरंत fast in the gerund form? Eating. Correct. Perfect. What Running. else? Playing. Running. Walking. Perfect. Walking है वहां पे, और कुछ? Sleeping. Sleeping. Perfect. Now in the infinitive. Correct, children. Now lovely. In an infinitive form, the same thing in an infinitive form is to walk. अब ये जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, to be, to do, to have, it's in this form. To walk, to travel, to vote. And once you add a to, never ever have gerunds with to. Remember that. I went to traveling to Kashmir. No, wrong. To traveling ऐसे कभी नहीं होता है. To walking, to voting. Once you have an infinitive form to, do not have an ing to it. Remember this, children. Gerunds and infinitives can function as the subject of a sentence or the object of a verb. Verb का object जो होता है is what? What is an object of a verb, children? Verb का object क्या होता है? जैसे I am eating my meal. I am eating an apple. Eating is what? A verb. Correct. But object क्या होता है? What is a object? Object of that verb? Apple. What are you eating? Apple. Correct. Perfect. Lovely, children. You guys are smart. Now let's talk about all about auxiliary verbs. There are some set of questions here. Let's solve them very quickly and move on to the other exercise that we have to solve. Now, she is watching cartoons. She is watching cartoons on TV. Is. So what is the auxiliary verb here? All the auxiliaries, if you see, are in the
in the bold. Correct. Bold, bold. That is called bold. That is not called dark. It's bold. So they have all bold. If you see here B, this is the bold. This is italics. This is underline. So if I have to underline a verb, I can just go select and I do underline. It is all underline. You got it? And मुझे किसी को cancel करना है तो I will just do a strike through. ये cancel हो गया. Correct? You got it? So this is how you have to use these functions of your either Word, Excel, PowerPoint. I think it is time for you children to learn these new techniques. You should be now very much well conversant and well versed with these new techniques, where you should be able to make a presentation probably in a half an hour's time, and which we will also learn going forward. Now let's see the auxiliary verbs. Now, she is watching cartoons on TV. So is the auxiliary verb. It is supportive. It is watching. So watching is what? Verb is auxiliary. Is auxiliary. It is helping. So as I said, it helps the main verb. So watching. And what is the object here? TV. TV. Right. Correct. Would you? It has started the sentence with, would you please take off your shoes outside? So what is the verb here? What is this helping? Wood. Would verb है बच्चों. Would verb कौन सा है इसमें? Take off. हाँ? Take off. Correct. Who said this take off? 100% to that child. Lovely. Taking off is an action, Baba. Taking off. This is an object. Taking off your shoes. कहाँ पे? Outside. In a sentence, you should be able to actually decode a sentence now. By now, you should be able to get the noun, pronoun. सर वुड की बात कर रहा है. हाँ, वुड क्या? वुड की तो वुड सपोर्ट कर रहा है. किसको सपोर्ट कर रहा है? आपके टेक ऑफ को. मतलब टेकिंग ऑफ इज एन एक्शन. Yes sir. Yes sir. Correct. So now in this, that was the best ice cream soda I ever tasted. Bolo? The best is a Best? tasted. Correct. Tasting. Lovely. Now the fourth one. Bethany has submitted her assignments. Assignment. Right? Who is this? Assignment. Submit. Yes. Who said this? Submit. Perfect. Submitted. Submitting भाई. Submitting. जाके आप दे रहे हो. अरे वो फॉर्म सबमिट किया है क्या? Submit is an action. फिर सबमिट क्या करना है? Object is assignment. He has not agreed to come along with me. Has not agreed to come along with me. Correct. She will arrive on time in the correct. She will arrive on time in the class. Let's move fast. We have lot of portion to cover today. Arrive. हाँ बोलो. She will arrive on Sir, time. arrive. Correct. Arriving. Arrive. We are having Sir, fun. arrive. आगे we are having fun in the resort. Having. Sir, arrive. Having. जिसने having बोला है वो correct है. Sir, having. जिसने having बताया है वो correct है, because it is the to be form of. It is the to be form. She will arrive. We are having fun. Unfortunately, she has completed all the chapters on. Correct. She was cooking at that time. Completed. आगे बराबर है. She was cooking at that time. William Shakespeare has written this book. Written. Working. Correct.
Jessica cannot write. Right. Correct. Now see, cannot write. Cannot is an auxiliary. It is helping her write the workbook. Jessica. Right. All of you should study well for the exams. Study. Correct. Then he might advise me in this situation. Advice. Correct. Advising is an action. I think we should. Talk. Correct. Max has Prepared. Did Martha accept my proposal? Accept. Correct. It was all my fault. Correct. Fault. My brother will not have to. Okay, guys. Maya was worried about her work. Worried. Children, beautiful. Now we learned auxiliaries, we learned gerunds, we learned infinitives. Now let's move ahead, and I want you children to take a clip of this slide. There are these 4 books which I want you to read. You're born to blossom. This is by APJ Abdul Kalam. Who was APJ Abdul Kalam? President. The Rocket man. करेक्ट. फिर बाद में वो हमारे देश के प्रेसिडेंट भी रहे हुए हैं. So he was a president and also he was a rocket man कहते हैं उनको. You are stronger than you think. Learn the basics on self-improvement. Children, read this book. You are stronger than you think. Learn the basics on self-improvement, how it can successfully help improve your life. This is by Bernard Hui. Then the third book is See Things as They Are, Life Lessons from Buddha. Now मैं चाहता हूँ हमारे संघ के कुछ अगर यहाँ पे कोई उपाधक है तो ये देखो उन्होंने कैसे किताबें लिखी है बुद्धा पे. They both are written by Nanditha Krishna and Ravichandran. We have to start writing the books on Buddha. Be Buddha, a mindful path to peace, love, and happiness. So this is how. So now moving forward, this I wanted. Now let's move to adverbs. Children, now today we are learning a new topic, very beautiful topic that is called adverbs. Now tell me what is an adverb? What you know about an adverb? Sir, help verb. Perfect. It helps the verb. जैसे में भी वो auxiliary क्या कर रहा है? It is also helping a verb. वो help कर रहा है verb को. But adverbs क्या कर रहा है? मैं बहुत सटीक प्रश्न पूछ रहा हूँ. Adverbs आपने पढ़ा है, आपके स्कूल में भी पढ़ाया होगा. ये करता क्या है? Add something to verbs. Exactly. That is what I was just with. It is adding, it is telling something more about that action. जो action आप कर रहे हो, ठीक है? जैसे मैं कर रहा हूं, I am driving my car. Driving is what? Action, verb. Correct? But now I am driving my car slowly. जब slow कर देता हूं तो adverb क्या कर रहा है? वो बता रहा है कि भाई ये गाड़ी चल रहा है, बट वो गाड़ी कैसे चला रहा है? स्लो चला रहा है, फास्ट चला रहा है? Slow. हाँ. फिर बाद में वो ये बताएगा कि ये किस पर्पस से कर रहे हैं. जैसे ये एडवर्ब्स किसके लिए यूज किए जाते हैं? किस जगह जा रहे हो, मतलब आउटसाइड जा रहे हो, अपस्टेयर्स. आई वॉज वॉकिंग अपस्टेयर्स. Or when I was walking upstairs, I tumbled down. When I was walking upstairs, right? I tumbled down. When I was walking downstairs, I tumbled down. मतलब मैं क्या कर रहा हूं? मैं यहाँ पे किस जगह चल रहा था? Walking तो कर रहा हूं, but किस जगह? Here, there, everywhere. Now tell when, time. Yeah, I was walking upstairs. I was walking downstairs.
midnight, in the midnight. मतलब कब? समय दे रहा हूं. ये भी वॉकिंग कर रहा हूं, बट कहां कर रहा हूं? प्लेस. कब कर रहा हूं? जगह. किस लिए कर रहा हूं? टू अवॉइड. ओ, इट वॉज रेनिंग हेविली एंड आई हैव टू रन अपस्टेयर्स, right? Right in the midnight, to get all the clothes removed from the rope where I had put them for drying. समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? कितना Yes, ऐड कर गया वो उसने? कितने चीजें ऐड कर दी? इतने सारी चीजें ऐड हो गई है. एडवर्ब्स में जब आप इतने सारे चीजें उसमें ऐड कर जाते हो, उसमें जगह आ जाती है, उसमें समय आ जाता है, उसमें पर्पस आ जाती है, उसमें फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है, मतलब कितने बार कर रहे हो. फिर मैनर, मतलब जस्ट, वेल, क्वाइट, क्विकली, हार्डली, केयरफुली, जैसे होता है ना कि मतलब आई वॉज वॉकिंग केयरफुली, आई वॉज वॉकिंग स्लोली एंड केयरफुली. इसमें एंड टू व्हाट डिग्री, मतलब बेयरली, ऑलमोस्ट, नियरली. तो ये सारे एडवर्ब्स जो होते हैं बच्चों, ये उस वर्ब को, मतलब उस एक्शन को डिफाइन करता है. और डिफाइन कैसे कर रहा है? जगह के लिए डिफाइन कर सकता है, टाइम के लिए, समय के लिए, राइट? ये जगह के लिए, टाइम के लिए. फिर किस चीज के लिए? पर्पस के लिए. कितनी बार? फ्रीक्वेंसी. कैसे? मैनर. manner. और किस डिग्री में? सो ये सारी चीजें एडवर्ब क्या करता है? उस एक्शन को डिफाइन करने के लिए Define. आपको. और हमने जो अभी पढ़ा पहले, वो जो ऑक्सिलरी, वो क्या करता है? इट इज जस्ट एन हेल्पिंग. दिस इज एडिंग इंफॉर्मेशन. दैट इज हेल्पिंग, दिस इज एडिंग. और वो हेल्पिंग जो कर रहा है, वो जो हेल्पिंग हो रही है आपकी, वो हेल्पिंग कैसे हो रही है? इन फॉर्म ऑफ gerunds एंड infinitives. gerund के फॉर्म में जाएगा तो ing फॉर्म ing. होगा, और infinitive के फॉर्म में रहेगा तो to. To Preceded walk, by to dance, to jump, to drive, to. okay, sir. करेक्ट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एडवर्ब्स. अब ये जो एडवर्ब है, डिस्क्राइब अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और अदर वर्ब, दिस थिंग, ठीक है. It tell us how, where, when, how much, and with what frequency. An adverb can tell how. How? Oh, the children were sitting quietly, peacefully, carefully in the classroom. They were sitting quietly, peacefully, and carefully. Now, where? Above, aboard, far, away, back, here, in their house, wherever they are joining from. आप घर से या घर के रूम से. where? जगह. when? on Sunday morning 11 o'clock. now, yesterday, soon, later, tomorrow. See, what is happening is adverbs start actually adding all of this. You will start getting you start adding so many pieces of information to your verbs, to your actions, like how, where, when, and how much. How much is quite fairly, too enormously, entirely, very, extremely. There are so many others. मैंने कुछ दिए हैं बच्चे यहाँ. इससे भी बढ़ के बहुत सारे हैं. इससे भी बढ़ के बहुत सारे हैं. हाउ मच, हाउ ऑफन, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने बार. द संगा मीट्स once in a month. Often, frequency. The sangha has one house a month, which is on every first of the month. How often? It is once a month. So हम क्या कर रहे हैं? Once. And how often में इधर once कहीं है? नहीं लिखा. So ये कुछ थोड़े से दिए हैं कि always, sometimes, often, frequently, normally, generally. So you should know this and how to frame this. Now, types of adverbs में adverbs and examples. Now, adverbs of frequency. जैसे कहते हैं ना, always, sometimes, often, usually, frequently, rarely, hardly, ever, never, generally, etc. So many. So examples is, she normally eats 3 meals a day.
So what is it saying? Frequency. जैसे हम 3 बार खाना खाते हैं, right? I take the breakfast early morning, then I have the lunch in the noon, and then the dinner in the night. Or there are some people who skip the dinner and then they have evening snacks, and that's all. They don't take dinner. So this is like, okay, 3 meals a day. That's the frequency. So I usually buy all my vegetables at the market. So I usually is talking about always, that I always buy my vegetables in the market se kharidte hain. So what you're doing is you're talking about some more information added to your adverbs. अच्छा, एक बात चीज बच्चों, ये बहुत अहम चीज है, ये जब हम पढ़ रहे हैं, this was very important. I wanted your attention to this. An adverb describes a verb. वो verb को भी describe करता है, याद रखना. वो adjective को भी describe कर रहा है, और एक another adverb को भी describe कर रहा है. जो adverb है आपने जो डाल रखा है उसको भी describe करता है, adjective को भी करता है. Adjective is describing your, what does it describe? The Adjective. noun. Correct, lovely. The And adverb. noun. तो एडवर्ब किस किस को डिस्क्राइब कर रहा है? ये एक दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव भी करता है और वर्ब को भी करता है. Adjective. करेक्ट, राइट? सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हियर you have children, frequency, we have these examples. Now adverbs of manner. Manners जो रहते हैं ना, हम कहते, oh that child is very cheerful, oh he is very efficient, मतलब very efficient in his work, very productive. मतलब किसी को अगर काम दिया जाएगा 1 घंटे में करना है तो वो आधे घंटे में खत्म करके, so this is like efficient. Painfully, मतलब basically anything which you are working upon and it's very laborious, it's very tedious, it's very humongous, मतलब बहुत बड़ा है, so it's painful to do that task. So carefully, slowly. And I have told you children, when we had the last 3 sessions, in that I have very carefully mentioned that if you need to improve upon your vocabulary, you need to download Norman Lewis. Norman Lewis is a book where you will have good number of words which you can actually by heart them and use them while framing the sentences. And when you do so, I also suggest you, so please go and watch TED Talks and Josh Talks so that it will slowly improve. Josh, you may not go do so very much, but TED Talks, do watch them. We will today have one very good session on the TED Talk that we are having. Now adverbs on time, it is like, okay, on manners is like again slowly, badly, easily, well. So there are 2 examples here. The children were playing happily with their toys. The children were attending the English class happily with their parents. So you may have your parents next to you, you may have your dadi, you may have your, mausa, mami, chachi, whosoever there. Then the police dealt with the incidents very efficiently, right? Uh, the the task assigned to one of the child from the class was executed very efficiently by him, very efficiently. So you are basically, what you are doing is you are executing whatever has been assigned to you very neatly, nicely. Adverbs of time. Now, yesterday, soon, later, yet, tomorrow. Adverbs of time. ये time के होते हैं. So time में कौन सा होता है? Now. Yeah. I'm Tomorrow. not free. Yes, I'm not free now. I'm studying. I'm attending a class. I'm not free now.
Yeah, I am not free in the evening either. We are going for a movie. Oppenheimer. Oppenheimer is a very good movie. I think I mentioned it last week or last to last week, prior week to that. I don't know how many of you all got an opportunity to watch that movie. Once again, I am going to tell this. Please go and watch this movie with your parents. Adverbs on time. Already, tomorrow, tonight, today, then, last month, year, last year, previous year, a year before. All this can be very well be put in time. Now, in time, there is one thing which I want to tell you. I'm writing something, children, here. Okay? Excuse me, sir. Yeah, bolo. Bolo, bacha. Sir, your voice are not clear coming. Voice is not clear. Yes, sir. Is it now or is it been like this for all that 1 hour I have been teaching you? ये मतलब अभी नहीं आ रही है या पहले से ही आपको नहीं आ रही थी? Sir, now. Your voice is coming. एक मिनट, अभी आ रही है? सर नहीं सर, आपकी आवाज ठीक से आ रही है। Yes, बच्चा sir. आपका माइक Your देख लो voice is बेटा, coming very आपका clearly. नेटवर्क देख लो, आवाज ठीक से आ रही है। एक मिनट सर, मैं एक सर कंटिन्यू कीजिए, आवाज आ रही है ठीक से। नहीं, मैं उनको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। एक मिनट सर योर वॉइस इज क्लियर। एक मिनट, एक ही मिनट, मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स डाल देता हूँ। Submit. Yes. Now I'll show you in time. This is very important, children. Very means very important. Now in many places, you will see since and for. Right? ये पढ़ा है बच्चों? पढ़ा है? Yes, sir. For. Now since क्या Yes. होता है और for क्या होता है टाइम में? बोलो। सर सीन्स का मतलब जो जिसकी एक टाइम लिमिट नहीं दी गई है। क्या 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 किसमें? बोलो, फिर से बोलो। सर मतलब वो होता है जिसकी टाइम लिमिट नहीं दी गई है। सर ये सुनाई दे रहा है क्या? जब से आई एम नॉट एबल टू लिसन। थोड़ा सा जोर से बोलो। सिंस का मतलब जिसकी कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है। सिंस नहीं बेटा, सिंस वो नहीं है, मैं बताता हूँ। और सर, फॉर क्या होगा? सर फॉर का मीनिंग रहेगा करके कि जिसमें कोई टाइम नहीं दिया होगा। अब ये हम टाइम क्या होगा? टाइम दिया नहीं होगा। नहीं बेटा, नहीं, तुमने उल्टा बोला है। टाइम दिया होगा, टाइम दिया होगा में फॉर है, और ये होता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो। अभी बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ। सिंस और फॉर ये दोनों आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, बिकॉज ये एडवर्ब टाइम्स में यूज करते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम में सिंस आप काफी बार देखते हो हिस्ट्री पढ़ते हुए। सिंस द आइस एज और सिंस द हड़प्पन civilization, or since the time of Buddha, or since the time of Samrat Ashok। मतलब ये क्या हो रहा है? since is referring to a time in past। एक past का टाइम है। बच्चा उठ लो। It's referring a time in past, say like when we say
1940, since 1940 or since 1947, right? We are a free country. Since मतलब किसी एक समय, since is a time in history, is referring to a time in past. So this is what. And for is I am studying for last 2 hours. For is basically period. मतलब Time कितने limit. समय, कितने समय के लिए. Time So duration. you should know this. यहाँ पे बहुत जगह हमारे बच्चे for को since से रिप्लेस करते हैं, since को for से. Remember this. This is a very good technique. So since and for has to be very neatly understood. This was time. Now moving forward is a place. Off, above, aboard, for, on, away, back, here, out. Now let me also tell you. You will be learning in this place of, above, board. इसमें एक अलग लेवल पे हम जब एडजेक्टिव्स या हम ये सब करेंगे. अपॉन, अंडर, ओवर, अबाव, beneath, below. फर्क क्या है ये आप समझोगे प्लेस में. इस प्लेस को डिफाइन करने के लिए बच्चों अंडर, अबाव, ओवर, Below. करेक्ट, बिलो, ये सब जो है इसमें फर्क क्या है. ये भी तो ऊपर ही है, अबाव भी ऊपर ही है, ओवर भी ऊपर है, बट फर्क क्या आता है. अंडर है, ये भी बिलो है, फर्क क्या है. अब हम वो भी सीखेंगे when it comes to places. Then this is going to talk about the place here. His children go everywhere with him. Let's open, like we say, yeah, all the Saman Sangha Upataks take their children everywhere where they go. Let's open the box and see what's inside it. Right? So inside is basically a place. अंदर में क्या है? Let's open the box and see inside. Everywhere. इसको गलत मत करना, ये place है. Everywhere. Above of place. हाँ. Adverbs of degrees. Degree is very important. Don't Quantity of mistake a. it. It is basically talking about the degree of its being, its completion. Say like, okay, yeah, I entirely ate a full plate of rice. I'm talking about its entirety. I was extremely hungry. I'm talking that degree of that my being, that state. कभी कभी बहुत बोलते ना, बहुत जोरों से भूख लगी है. I was extremely hungry. Rather is an option. I rather sleep. I rather sleep than trek. मतलब मैं ट्रैक करने के जगह में rather I go to bed and sleep, I take rest. Almost is like okay. And ये हर एक शब्द है ना, हर एक वर्ड के हम सेंटेंसेस अभी आगे चलते हुए करेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि क्वाइट, टू, एंटायरली यूज कैसे करना है. क्योंकि ये जो चीजें हैं, ये जो शब्द है बच्चों, ये इतने इंपॉर्टेंट हैं. जब आप पढ़ते हो, बी वेरी श्योर वेयर टू यूज barely एंड वेयर टू यूज entirely, बिकॉज ये दोनों में बहुत फर्क है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन entirely एंड barely? कोई बता सकता है यहाँ पे? Sir, barely is for the minimal. If you are doing something barely, you are not giving much Correct. attention. Perfect. Very nice. It is barely, मतलब मैं कभी तो, but entirely is हमेशा. मतलब जो भी रहेगा in its entirety. Always नहीं है वो,
barely की जगह always कर सकते हैं उसका opposite, almost, absolutely, just because these are things which you should know. It should not happen that you're using a wrong word, the wrong degree in putting it in a sentence. Otherwise, the meaning of the sentence changes completely. So when you are actually structuring the sentences, see to it you put the right word in the right place. Adverbs of evaluation. Evaluation मतलब क्या होता है बच्चों? What is evaluation? To evaluate. So to calculate something after analysis. To evaluate is not actually calculate. What is evaluation? Then what is the difference between evaluation and calculation? If I have to ask you that way. Sir, calculation is basically, especially based on the numbers. If you're calculating something, Correct, that's right. exactly the. And what is evaluation then? Sir, after analysis, something like you are analyzing something, and then you are evaluating the result. Yes, there's a big difference between I evaluate. So when you have an evaluation process, say like the Sangha has a evaluation process of every smiti or every sangeethi that we are, or every committee that has been formed. So what we are doing is we are actually evaluating that how much progress has each committee done in the past 1 month, 1 year, 1 quarter. You got it? So evaluation and your calculation is way too different. So you should know these differences. Otherwise, you end up in putting up a wrong word and it is going to change all the meaning of a sentence. And this is going to be asked in all your exams, be it SBI, be it your CET, be it your NEET, be it GRE, TOEFL, GMAT, whatever exams you take in your life, everywhere you will be asked to do this. So adverbs of evaluation is very important. So apparently, what is apparently? How many of you all know? Apparently it turned out to be a road full of traffic. What is apparent? शब्द का मीनिंग करने के लिए बच्चों अभी हम ly जो है ना, ये सेंटेंसेस ly, ing, ly के साथ सारी एंड हो रही है. आप देखोगे adverbs, if you see, all are actually ending with lys. दिख रहा है आपको? अब उस पे भी हम Yes, आएंगे sir. बाद में. What is it and how to use them when you are actually going to use them. So what is apparently? Apparent मतलब क्या होता है? What was apparent to me was जो हमने सोचा था. Yeah, that was my app. And that is why I have an apprehension. I was apparent. I was very apprehensive. I was very apprehensive is another form. I was very apparent. मतलब ये मुझे पता था ये ऐसी होगा कि like okay, हाँ ये पूरी रोड ट्रैफिक भरी रहेगी. And it turned out to be, apparently it turned out to be true. You got it, children? Yes, sir. So you should now slowly get into this. Please pick up Norman Lewis. My suggestion to you once again is please pick up Norman Lewis. Norman Lewis is this book. Let me bring it up to you. This Word Power Made Easy. Are you able to see this book? This is the book. It is available. You just Yes. this is available. Please start. Suppose I start. We start with A. It will start with A. Okay. One minute. The PC has slowed down. Rajesh sir, Yeah.
Sir, it is this book. Which one? आप ये कर सकते हो, sir. So this is this book. Children, see. Now, if you go here, so this now I have also downloaded this Norman Lewis. It's available in different formats. I mean, you can as well keep them whichever format you have. Mine would be a different version. So if you see, they have in the earlier pages. I mean, they will give you that, okay, the phonetics, the uh, the the breaking of the word. Then they will also talk about, the if you add the syllables, say like ar, er, or, of, how the words changes these with the syllables. They'll teach you everything. The phonetics is very important, the syllables are important, and then they have with a b c d, ये सब के साथ भी है. जैसे आप इधर आ जाओ, you will get all this vocabulary range. So you will say disheveled, like lenient, baffling, baffling problem. A baffling problem, what is it? Baffling is difficult, simple, puzzling, long, new. What is it? What is a baffling problem? What is a lenient parent? Is it a tall, non-strict, wise, foolish, severe? So lenient parents are not strict. Not Lenient. strict. Baffling is puzzling. Disheveled, untidy, fierce, foolish, peculiar, unhappy. Disheveled. Oh, I always see my room to be disheveled. It is untidy. Disheveled rooms are called, very neat and clean. Disheveled is very dirty, ugly, very disheveled. पूरा इधर उधर हम कहते हैं ना किसी के रूम में जाके, अरे क्या है, पूरा सामान सब इधर उधर बिखर पड़ा है. It's a disheveled room. What is this? Prevalent disease. Prevalent, dangerous, catching, childhood, fatal, widespread. It's a prevalent disease. So the COVID was a prevalent disease. So it was Widespread. widespread. Yes, sir. Omnious report. Loud, threatening, untrue, serious, unpleasant. What is omnious? Unpleasant. Huh? It is an unpleasant report. Omnious report. Right? An incredible story. Incredible is true, interesting. What is it? An incredible story. True, interesting, well-known, unbelievable, unknown. What is it? Incredible. 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 It's an incredible story. Very incredible, interesting, unbelievable. नहीं आएगा. देखो ये कितना पास है, इसी से कंफ्यूज करते हैं वो. Ophthalmologist. What is ophthalmologist? It is something to do with Eye your doctor. eyes. Correct. Supersede the older law. Supersede. What is this? The earlier older law. The Constitution has an article which says all the laws before this time are void, are no more in existence. So they supersede. Take the place of. Yes, take the place of. Now no more, it will not be continued. Those will not. The new constitution which got implemented since 1947 will take over. An anonymous donor. Anonymous means? One whose name is not known. Correct. Anonymous, whose one name is not known. So ये सब बच्चों जब तक आप नहीं करोगे, so how will you improve your English? I mean, you need to get into all this. So this is evaluation process. What we were just studying was evaluation. I was just trying to evaluate you. Conjunctive adverbs.
Now this is something accordingly, beside, equally, further, hence, namely, next, now, additionally. So this is what conjunctive. Conjunctive is what, conjunction is adding something. Besides, yeah, equally, I see that equally what he has said, equally this is also true. You're adding something. Further, yeah, hence, further, I see that okay, they are going to, win the race. Further, again, in addition to, hence, it is something like okay, you have a conclusion in your laboratory test, and hence I see that because the gas color is green, it is now going to be H2S or something like that, or H2S is colorless, the gas doesn't have any color, so it is H2S, correct? So something like that. Yes, Hence, sir. namely, next, now. So you would get these things, and when you are actually going to do some questions, you will have to start framing this. Now, very interesting thing I'm going to bring out, children. Now let's listen to one very good TED talk. Okay. Now I will stop this because my session today is over at 12:15. It is 12:15. I've been talking for 1 hour 15 minutes today. Quite a Excuse me, lengthy sir. class. Yeah, tell me, what is it? Sir, where we use beneath and how it is used? Beneath. Beneath. Yes, Beneath sir. is, see, when we will study this, below and beneath. Yes, Beneath. sir. But just to answer you right away, below, you will always see, yeah, I have this below, under, and beneath. Follow me very clearly. Below, under, and beneath. These are used based on how much below it is. I'll stop my screen and I watch my hands, right? ये कितना नीचे है से हम कहते हैं you will always see, yeah, where is the book kept? The book is kept under the pillow. Yes, sir. Right? Or below the pillow, right? But beneath the earth's crust, matlab bahut niche, beneath, under, below, and beneath. Beneath. It depends on how much is the proximity distance. The degree of the depth. Correct. So this is how it is. So that is where you have to use. जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे पिलो के नीचे रखा हुआ है, तो you don't say कि like beneath the pillow. Beneath the pillow, right, sir? नहीं, गलत. Beneath कब यूज होता है तुम देखो, जितने भी अर्थ के ये जो होते हैं ना, earth's crust. Measurements होते हैं. Yes, sir. Correct. So when it is deep down, so beneath. Got it? Like beneath the ocean. Correct. You got that. Thank That you, time sir. you don't say कि like okay वो जो कहते हैं ना below, वो नहीं, वो then you are actually so that proximity that you learn. Okay. Okay, sir. Now I'm going to share you something very beautiful, children. Since we have good numbers today, listen to this talk. I don't know why did children leave. There were 55. तुरंत छोड़ के चले जाते हैं बच्चे. अरे सुना करो, ये सब तुमको नहीं मिलेगा कहीं. You will be. अब मैं एक आपको ऑडियो सुना रहा हूं, ठीक है? सिर्फ 4-5 मिनट का है. ओके सर. शेयर साउंड. ओके सर. अभी वो वीडियो का साउंड आ रहा है क्या, देखना, मुझे बताना. नहीं आ रहा है तो बताना, आ रहा है तो वेल एंड गुड. This is a video on TED. Okay, children? This is a TED. She is now मेरे यहाँ मुझे पता नहीं है कि हमारे यहाँ आज ये सारे बच्चे ही ज्वाइन हुए 50 की 50, या कुछ उपटाक भी है जो
उम्र में बड़े हैं। मैं हमेशा कहता हूं ना, क्रिटिकल एनालिसिस होनी चाहिए। ये वीडियो देखने के बाद ये हम हमारे जितने बड़े लोग हैं, ये पहले 4 मिनट का टॉक होने के बाद मुझे इसका क्रिटिकल एनालिसिस बताना, 5-6 मिनट के बाद। सुनाई दे रहा है बच्चों? Yes, sir. हाँ, अभी सुनो। Today, in all humility, wanting to share with you my journey of the last 6 years in the field of service and education. You know, I'm not a trained academic, neither am I a veteran social worker. I was 26 years in the corporate world, trying to make organizations profitable. And then in 2003, I started Parikrama Humanity Foundation from my kitchen table. The first thing that we did was walk through the slums. You know, by the way, there are 2 million people in Bangalore who live in 800 slums. We couldn't go to all the slums, but we tried to cover as much as we could. We walked through these slums, identified houses where children would never go to school. We talked to the parents, tried to convince them about sending their children to school. We played with the children and came back home really tired, exhausted, but with images of bright faces, twinkling eyes, and went to sleep. We were all excited to start. But the numbers hit us then. 200 million children between 4 to 14 that should be going to school but do not. 100 million children who go to school but cannot read. 125 million who cannot do basic maths. We also heard that 250 billion Indian rupees was dedicated for government schooling. 90% that was spent on teacher salary and administrator salary. And yet India has nearly the highest teacher absenteeism in the world, with 1 out of 4 teachers not going to school at all the entire academic year. Those numbers were absolutely mind-boggling, overwhelming, and we were constantly asked, when will you start, how many schools will you start, how many children will you get, how are you going to scale, how are you going to replicate. It was very difficult not to get scared, not to get daunted, but we dug our heels and said, we're not in the number game. We want to take one child at a time and take the child right through school, send to college, and get them prepared for better living, a high-valued job. So we started Parikrama. The first Parikrama school started in a slum where there were about 70,000 people living below the poverty line. Our first school was on a rooftop of a building inside the slums, a second-story building, only second-story building inside the slums. And that rooftop did not have any ceiling, only half a tin sheet. That was our first school. 165 children. Indian academic year begins in June, so June it rains. So many a times all of us would be huddled under the tin roof, waiting for the rain to stop. My God, what a bonding exercise that was. And all of us that were under that roof are still here together today. Then came the second school, the third school, the fourth school, and a junior college. In 6 years now, we have 4 schools, 1 junior college, 1,100 children coming from 28 slums and 4 orphanages. अभी मैं सर, यहाँ जितने भी हमारे जो बड़े बैठे हैं, इसमें एक समस्या है। ये कह रहे हैं मैडम कि इन्होंने इतने पुअर चिल्ड्रंस जो है इतने स्कूलों में इतना पढ़ाया है और सब लोग तालियां बजा रहे हैं। कोई उठ के क्रिटिकल एनालिसिस करोगे
तो इसको क्या प्रश्न पूछना चाहिए, बताइए मुझे। Sir, what were the difficulties she faced while doing all नो the things? नो नो, कोई बड़े बड़े जो भी है, तुम भी कर रही हो बेटा, बहुत अच्छा है सानवी, दूसरे और जो इतने बड़े लोग जो यहाँ बैठे होंगे, एक बड़ी चीज, सर एजुकेशन देना किसका काम है? It's government's responsibility. एग्जैक्टली। स्टेट का Did सर। anyone get up there and ask why is the government not doing their duty? Are you responsible to deliver this education? As per the articles, this is critical analysis. मैंने ये चीज हमारे वहां पे भी बताई थी। ये जिस दिन हम क्रिटिकल एनालिसिस करना सीख जाएंगे, तब हमको पता चलेगा कि हमें एनालिसिस कैसे करना है, हम गलत कहाँ होते हैं। सर एजुकेशन आप वहां से क्यों नहीं इम्पार्ट कर रहे हो? क्यों? क्योंकि आप तो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा, अच्छा ये सारी जो चीजें हैं, ये जो मैडम बता रही है, फॉर हर शुक्ला घोष जो भी है, ये एक चीज बता रही है कि इसने कम से कम कितने बच्चे ये किए हैं। शी हैज एक्चुअली गॉट सम whatever 200 500 children, correct? Now the question comes, are the only 200 students we are thinking about? First. Second, look at the infrastructure she would need, and third, where is she going to get the funds from? तो ये सारे फंड्स कहां से आ रहे हैं? ये सीएसआर फंड्स आते हैं, ये सीएसआर फंड लेते हैं, और ये सीएसआर फंड्स का पूरा उनका जो है ना घूमना, ये सब मैं ये बच्चों को नहीं बताना चाहता हूं अभी, क्योंकि बच्चे के लिए ये सारा चीज नहीं है, बट जो हमारे बड़े उपाटक जो ज्वाइन किए हैं, दिस एनालिसिस ऑफ सच वीडियोस टेड टॉक्स में जो होती है ना, उसके ऊपर हमारा एनालिसिस होना चाहिए। और हम में से भी कुछ बंदे टेड टॉक्स में जाके अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, बिकॉज हम प्रेजेंट कर नहीं रहे, गलत लोग जाके गलत चीजें बता रहे हैं और हम उसे सुन के तालियां बजाते हैं, यही दिक्कत है। तो समन संघ के मार्फत हमने अभी सही चीजों को भी, सही चीजें भी बताना चालू करनी चाहिए, और हमने भी टेड टॉक्स में जाके अपने आप को वहां रिप्रेजेंट करना चाहिए, सही चीजें ले जाके। कामले सर। हाँ सर। सर मैं ये कह रही थी कि अब तो हर जगह गवर्नमेंट स्कूल उपलब्ध हैं और वो निशुल्क शिक्षा दे रहे हैं हर जगह। बराबर। और कोई भी ऐसा गांव या कोई भी ऐसा कस्बा नहीं है जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल ना हो। हाँ बहन जी, बरोबर है। 1 to 5 और 6 to 8। तो तो हम कौन से गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं? सारे बच्चे तो वहां पर निशुल्क खाना खा सकते हैं, निशुल्क पढ़ सकते हैं, निशुल्क किताबें ले सकते हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें ड्रेस मौजों के लिए, एक्सेसरीज के लिए पैसे और दिए जाते हैं। तो ये कौन से गरीब बच्चे पढ़ाते हैं? यस, सो दिस शुड बी आवर एनालिसिस। यू आर परफेक्ट बहन जी, यही मैं चाहता हूं, क्रिटिकल एनालिसिस हो जाए हमारे समाज जब ये क्रिटिकल एनालिसिस करना चालू कर देगा, तब पता चलेगा। अब जैसा बीच में एक वीडियो आई थी, नीता अंबानी यूएस में जाके बुद्धम शरणम गच्छामि बोलती है, और हमारे सारे लोग उसको लाइक करना चालू कर दिए। पूरी दुनिया को ऑलरेडी पता है ये बुद्ध का जगह है, उनको कोई जरूरत नहीं है। वो किस लिए बोल रही है, वो अहम बात है, क्योंकि सारा फंड जो आता है, और वो जो है वो फंड रिलायंस फाउंडेशन के नाम पे नहीं है ताई बहन जी। अगर आप देखोगे तो वो जाके जब प्रेजेंट की, तो नीता अंबानी फाउंडेशन, मतलब एक व्यक्ति के नाम का फाउंडेशन पे जाके प्रेजेंट की, ना कि रिलायंस फाउंडेशन। रिलायंस फाउंडेशन एक कंपनी है, नीता अंबानी फाउंडेशन एक व्यक्ति का फाउंडेशन है। तो फंड कहां पे आएगा? नीता अंबानी फाउंडेशन में जाएगा। फंड वहां पे जाएगा तो फंड किसके लिए उपयोग होगा? तो ये सारी चीजें हमें एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। मैं आपके जो भी प्रश्न होंगे, यहाँ 2 हाथ ऊपर हुए हैं, सो कटके सर का एक है और इनका है, सो वो भी आपके कुछ आंसर्स देंगे। अब मैं ये फोरम ओपन कर देता हूं, मेरी तरफ से आज की क्लास खत्म। जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी दूसरे जो भी प्रश्न है आप बात कीजिए। कटके सर प्लीज टेक ओवर।
जी जी सर, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आपने जो अभी फिल्म बताई है ये शुक्ला मैडम की, इसके बारे में बताता हूँ। Yes, बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू एजुकेशन इज और फंडामेंटल राइट। right, sir. शिक्षा का अधिकार ये हमारा मूलभूत अधिकार है संविधान में। दूसरी बात बाबा साहब ने खुद बताई, यही बात मैं बता रहा हूँ आपको। बाबा साहब का ये कहना था कि हमारा जो जनरल बजट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या सारे गवर्नमेंट्स का, जो राज्यों के सरकारी है उनका, वो मिनिमम 6% से प्लस होना चाहिए, छह Right, प्रतिशत से ज्यादा अभाव। तो इस साल का सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट अगर हम देखते हैं तो 45,42,000 करोड़ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट था। तो इसका right. अगर 6% अगर निकाल लेते हैं हम लोग, तो हम्म, करीब करीब हमारा 3-3.5 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है वो प्राइमरी एजुकेशन और एजुकेशन के लिए होना चाहिए था। बराबर उसमें है। से ज्यादा बच्चे ऐसे होते हैं शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के और ओबीसी के। हम राइट, देखते हैं कि हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एजुकेशन का बजट है वो 1.6 है। सिर्फ नहीं एक सर, उससे पॉइंट भी छह कम है। प्रतिशत ही ओनली हमारा 95,000 करोड़ है। यस अलोकेशन ऑफ फंड है। तो ये एक गलती हो रही। दूसरी बात यह है कि फंडामेंटल राइट होने की वजह से ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि बेसिक सारी फैसिलिटीज है वो स्कूलों में दे दी जाए। अभी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में मैंने काम किया है, उसमें से बताता हूँ मैं, करीब करीब 6,500 स्कूल बंद किए जा रहे हैं। और उसको रीजन ये बताया जा रहा है कि स्कूल में अटेंडेंस कम हो रहा है, बच्चों का रिजल्ट कम आ रहा है, इसीलिए वो स्कूल बंद कराया जाए। और उसके बगल में ही उसके प्राइवेट स्कूलिंग शुरू की जा रही है, जिसमें कि फी है। अभी तो 1-2 साल के लिए फ्री में देंगे, बाद में वो फी का स्ट्रक्चर बदल देंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्रिटिकल एनालिसिस करने के मुद्दे हमारे हैं। अभी बच्चे हैं, हम लोग बड़ों के साथ इसका एनालिसिस करेंगे। लेकिन हमारी जो शिक्षा की जो नीति है, वो शिक्षा की नीति जिस तरीके से संविधान कहता है उस तरीके से नहीं हो रही। बहन जी ने बात की, वो ठीक है कि स्कूल अवेलेबल है, खाना भी अवेलेबल कर दिया जा रहा, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन की बात जो संविधान करता है, वो क्वालिटी एजुकेशन में हम लोग कम लैकिंग है, पीछे है। क्योंकि वर्ल्ड का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ जो बताया जाता है, 2015 में यूनाइटेड नेशन ने दुनिया के सारे देशों को एक टारगेट दिया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ। मतलब आपको दुनिया में जिंदा रहना है प्रगति में, तो उसके लिए बेसिक चीजें कौन कौन सी होगी, तो उसमें एजुकेशन है, से आपका जो अन्न है, फूड वो है, और आपका जो शिक्षा का व्यवहार है। तो इसके लिए बेसिक एजुकेशन के लिए बजट का प्रोविजन किया जाना चाहिए था। ऐसा यूनाइटेड नेशन का मैंडेट होने की वजह होते हुए भी वो अलोकेशन नहीं किया जा रहा। तो बराबर। ये हमारे बड़े लोगों की बात है, समन संघ की पॉलिसी का भी मुद्दा है। हम इसके बारे में अगला डिस्कशन करेंगे। अभी ठीक है। सर हम ये कहते हैं कि हमारे बीच में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि आईआईटी से रिलेट करते हैं, जिन्होंने पढ़ाई करते हुए ऐसे भी हालात में गरीबी से ऊपर उठकर समाज के साथ संघर्ष किया और उन्होंने अच्छे मुकाम पाए हैं। उसमें से हम लोगों में से कुछ 2-4 बच्चे हैं जो अपने बारे में बताएंगे। सर, ऋतिक कामले है संजय क्या सोमपुर का उपस्थित? हाथ ऊपर है। और यस यस, पहले एक हैंड रेज ले साहिल, लेते हैं। योर मोटिवेशन नॉट साहिल, पता नहीं उनका भी हैंड ऊपर है, जरा इसका देख नाम क्या लेना। है सर? नाम लिखिए है। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है, अपना नाम ओप्पो लिखा है या मोबाइल का नाम लिखा है, अपने नाम से दर्ज हो जाइए। जैसे यहाँ पर 3-4 लोग तो ओप्पो के नाम से है, फिर कुछ रेडमी के नाम से है। तो आप जब भी क्लास में आते हो तो नाम दर्ज कीजिए, क्योंकि आपका रिकॉर्डिंग हम कर लेते हैं कि कितने बच्चों ने यहाँ पर आज उपस्थिति दर्ज की है। और उसके हिसाब से हम लोग अगले हफ्ते में क्या प्रोग्रेस करनी चाहिए इसके बारे में भी तय करते हैं। तो पहले हैंड रेस का ले लेंगे, उसके बाद बच्चे टॉक करेंगे। यस सर, योर मोटिवेशन नॉट साहिल, ये कौन है? अपना नाम बताइए, परिचय दीजिए और अपनी बात कहिए। Sir, very good afternoon. This is Sahil Arora, sir, from Ludhiana, Punjab. जी सर Hope बोलिए। my हाँ जी, हाँ जी। सर, मैं इस ग्रुप में, मेरे दोस्त है राजकुमार जी, इंडियन रेलवेज में है वो, उनके थ्रू इस ग्रुप में आया हूँ सर। जी सर, यू आर मोस्ट वेलकम। हाँ आप जी, क्या हाँ जी करते हैं सर। सर? सर, बाय प्रोफेशन आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आई वर्क फॉर अ पब्लिक सेक्टर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके ओके ओके। हाँ जी। एंड सो पार्ट योर टाइम आई बैंक एम। हैज आपके बैंक में, ये पब्लिक सेक्टर बैंक हो या प्राइवेट कंपनीज हो, इसमें भी एक निधि होता है।
जैसा राजेश सर ने बताया ना, तो आप लोग बैंक की तरफ से भी इसमें कुछ कर सकते हो। एनीवे कोई बात नहीं, आपका स्वागत है। और हाँ आप जी। छोटे छोटे बच्चों को जैसे 5th क्लास से लेकर तो आगे आगे की सारी शिक्षा है, उन बच्चों को यहाँ पर ज्वाइन करा सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश का ग्रामर, इंग्लिश का भी शिक्षा दी जाती है। उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, फिर बाद में उसी यूथ लोगों को उसी जॉब्स की वजह से, अपॉर्चुनिटीज है, हाँ जी, हाँ जी, उसी वजह ऐसी से भी दी सर मैं, जाती है सर। तो आगे चल के ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश कीजिए सर। जी सर। ठीक है सर। और सर मैं पार्ट टाइम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हूँ। मैं अपने परिवार और जॉब के अलावा मुझे 1 मिनट भी मिलता है तो मैं सोसाइटी को देने की कोशिश करता हूँ। और ये योर मोटिवेशन और साहिल मेरे चैनल का ही नाम है जो मैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पे हूँ। और मैं जी सर। बच्चों को पढ़ाया भी है, मैंने काफी टीच भी किया है। मैंने आइल्स का जो स्पीकिंग पार्ट होता है उसके लिए भी ट्रेनिंग दिया है बच्चों को। जी। हाँ जी सर। तो सो यू आर बट मैं मोस्ट अभी, वेलकम सर। आप हाँ जी, जुड़े हाँ जी, रहिए इसमें, और हर दिन हमारी रात को 8 बजे से 11 बजे तक इसी लिंक पर डेली मीटिंग होती है। अगर आप उसमें ज्वाइन हो जाते हो तो हमारा कंसेप्ट क्या है, क्यों बच्चों को हम हम्म, जोड़ना चाहते हैं, क्यों बच्चों की आगे की फ्यूचर के बारे में, उनके लिए क्या कुछ करना चाहिए इसके लिए सोचना चाहते हैं, और हमको इकट्ठा क्यों आना, इसके बारे में हर दिन बताया जाता है सर। जी वेरी सर। गुड सर। ठीक है सर। संजय सोमकुमार सर, संजय सर सोमकुमार सर है भाभा एटॉमिक से। हाँ बच्चों, बोलो बेटा। सर राइट टू एजुकेशन से का जो एक्ट है, उससे 1st to 8th तक सबको फ्री एजुकेशन दिया जाता है। उसमें मिड डे मील भी रहता है। तो ज्यादातर बच्चे ओनली मिड डे मील के लिए ही क्यों आते हैं? बोलो बोलो बेटा। हाँ, मिड डे मील्स के लिए आते हैं, बराबर है। क्योंकि जो खासकर देहातों में जो बच्चे होते हैं ना, विलेजेस में, उन बच्चों की कभी कभी खाने पीने की सुविधा नहीं होती, तो बच्चों को खाना मिलता है इसलिए भी आ जाते हैं। इसका इंटेंशन इसके पीछे ये है बेटा, कि बच्चे को अगर खाने की भी सुविधा मिल जाती है, तो बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जिनको दोपहर का खाना नहीं मिलता, तो उस बहाने से आते हैं और फिर वो सीखते हैं। और एक बार उनको आदत लग गई सीखने की तो फिर उनका मन लग जाता है। क्योंकि बहुत सारे गरीब बच्चों में भी टैलेंट होता है, लेकिन सुविधा नहीं होने की वजह से वो शिक्षा नहीं ले पाते। इसीलिए शुरू किया है बेटा। वेरी नाइस, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, यस यस। सर बट ये मोटिव तो नहीं होना चाहिए ना कि मिड डे मील यू आर स्टार्टिंग जस्ट बिकॉज के चिल्ड्रंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चिल्ड्रन आए। आई नो कि बहुत सारे जो बैकवर्ड एरियाज होते हैं वहां पे खाने की भी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट द मोटिव ऑफ द एम जो होना चाहिए वो एजुकेशन का होना चाहिए। मोस्टली जो बच्चे आते हैं वो खाने की वजह से आते हैं, और एक तो मुश्किल से उसमें बहुत बहुत रेशियो बहुत कम है उन बच्चों का जो सिर्फ पढ़ने के लिए बेसिस के पढ़ भी देते हैं। तो सर ये नहीं होना चाहिए कि जो एम है कि मिड डे मील इसलिए स्टार्ट करा है ताकि बच्चे आ सके, नॉट फॉर दैट। एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए ना सर, अवेयरनेस हाँ, कि लाइक बराबर, वो समझा आपका सके। बराबर कहा बेटा आपने। पर बात ऐसी है कि देहातों में बहुत सारे ऐसे देहात है, कभी कभी बस्तियां होती है, मजदूर लोग काम करते हैं ना, जी जैसे सर। खेतों में काम करते हैं या किसी गवर्नमेंट के बड़े प्रोजेक्ट में काम करते हैं, जैसे कोई डैम बनाना हो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो। तो ऐसे में बहुत सारे गरीब लोगों के बच्चे भी वहां पर रहते हैं। तो उनको बेसिक फैसिलिटी जो होती है, क्योंकि फंडामेंटल राइट है हमारा शिक्षा देना, तो यस उसका सर। इंटेंशन ही यही है कि गरीब तबके तबके के बच्चों को उनकी लगन लग जाए स्कूल में आने की। इसीलिए मिड डे मील शुरू किया गया है। और दूसरा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक कहना है, ऑब्जर्वेशन ऐसा था कि हमारा जो हेल्थ का जो स्टैंडर्ड होता है, जितनी न्यूट्रिशनल हमको मिलनी चाहिए न्यूट्रिशंस, वो न्यूट्रिशनल वैल्यूज हमको खाने में नहीं मिलती। तो इसीलिए उस खाने खाने को उनके लिए उपलब्ध कराया जाता है, ताकि उनकी सेहत भी अच्छी हो। इसके बाद जब मोटिवेट करेंगे तो ये स्कूल के टीचर का काम होता है कि बेटा सिर्फ खाने के लिए नहीं बुलाया गया आपको। आपको तो प्राइमरी आपका काम है कि आपको शिक्षा लेना है, आपको एजुकेशन लेना है, आपको किताबें पढ़नी है। बट ये धीरे धीरे होने वाली बात है, एकदम से बदलाव नहीं आता। सर बट दे आर जी नॉट बेटा। गिविंग द क्वालिटी एजुकेशन राइट, दे आर नॉट Yes, गिविंग। what I said, the Constitution says that main intention of education to make it a fundamental right,
is that it should be given the quality education. बट हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो उतनी कारगर नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है कि अप टू 10th स्टैंडर्ड एजुकेशन देती है, उसके बाद का सारा डिसीजन लगता है प्राइवेट कर दिया गया है। ये गलत बात, तो ये होना चाहिए, इसके लिए हम भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। यस अभिजीत सर, आप कुछ बात करना चाहते हैं? अभिजीत, नो सर। आपने माइक खोल दिया है। अच्छा, ऋतुज कामले उपस्थित है? ऋतुज, राजेश कामले सर और किसी को बुलाया था सक्सेस स्टोरी के लिए? एक्सक्यूज मी सर। यस सर, मेरा ये कांटेक्ट में एडेड नहीं है किसी भी ग्रुप में। अगर कोई फीमेल वाला या फिर कोई यूथ का कोई ग्रुप है, प्लीज आप ये नंबर ऐड कर दीजिए, मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है। अच्छा, चैट बॉक्स में नंबर डाला, ठीक है हम डाल देते हैं। थैंक यू सर। सर और एक है, नेक्स्ट वीक मेरे जगह कीर्ति मैथमेटिक्स का क्लास लेने वाली है। पूरा हमारा अबैकस और मैथमेटिक्स रहेगा नेक्स्ट वीक का, बिकॉज नेक्स्ट वीक आप इधर आ रहे हो और हम सोलापुर कोल्हापुर वो दौरे पे रहेंगे, इसलिए मैं कीर्ति से ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। कीर्ति इज गोइंग टू टेक अप द लेक्चर नेक्स्ट वीक। सो मैथ्स का लेक्चर रहेगा बच्चों, बहुत अच्छा लेक्चर रहेगा मैडम से, पूरे लगन के साथ ये करना। टू यू कटके सर, टू यू। यस सर। अभी राजेश कामले सर ने जो क्लास लिया है, इसके बारे में किसी बच्चों को अगर कोई बात करनी है तो अपना माइक अनम्यूट कीजिए या फिर हैंड रेस कीजिए। हैंड रेस करने के बाद हम लोग लाइन से एक एक को चांस दे देंगे। बच्चों सामने आओ, अपनी बात कहो, या फिर आपको और कुछ बात करनी है, कुछ सजेशन देना है तो आप दे सकते हो। एक एक करके हैंड रेस करके बात कीजिए। कामले सर, वो करके सर, हाँ बोलो सर। बॉटनी की लगवा देंगे, ठीक है सर। हमारी संख्या 50 के ऊपर जा नहीं रही है जी। उसको क्या करें सर उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, कई टीचर से बात की है, अभी कर भी रहा हूँ। अभी मैं वहीं पे गया था, अभी जो आपकी क्लास चल रही थी तो वहीं पे गया था इसी काम के लिए। तो वो कहे कि अगली बार मैं खुद जाके सभी की जूम मीटिंग खोल के आऊंगा। कई टीचर, मैं सोम कुंवर सर को भी ज्वाइन कराया हूँ, वो सर भी है आज इधर। तो सर आप भी थोड़े, आपके उधर के 250 बच्चे हैं अपने SC ST OBC के, तो आप कृपया करके जरा उनको ज्वाइन कराओ। सोम कुंवर सर, हाँ अपने भोली चौधरी सर भी कुछ बात रखना चाहते हैं। हाँ बोलो सर। राजेश कामले सर, हाँ बोलो सर। वो ऋतुज कामले है जो IIT से है, वो बात करना चाहता, पर होस्ट ने उनको अनम्यूट किया, ऐसा बोल रहे हो? नहीं, मैंने तो किसी को म्यूट नहीं किया है। ये तब तक ये भोली चौधरी सर कुछ बात रखना चाहते वो करो और उसको अनम्यूट कर देना, मैं करता हूँ। Yes, sir. This is Holi Chaudhary. Actually, I know Ramesh sir and almost I am a member of this group, Saman. Today I saw the message in Saman group, then I joined here. And I am so happy to know about this group. This group is for kids or for education. So I am very interested to join in future as well. And I think I may help to students, the students who want to prepare competitive examination or to be fluent in English as well. Already Rajesh sir, very good lecture on this topic, means grammar. But I also want to help those students who want to become a fluent speaker without grammar or just in professional ways. Okay, and if any student who are preparing for general competition, competitive examination, then I may help you. Actually, I am in a railway,
I passed already 22 government exam and I joined in 2004 in railway. Right now I am a chief local inspector in railway. Presently I am doing a job as a chief crew controller. Just 396 loco pilots are working under me. Okay, so I am so happy to join this group. I know Ramesh sir came Raipur once and I already met with him. Yeah, this is from my side, sir. Thank you very much, बोली सर, बोली चौधरी सर. Thank you, You are sir. so Boli nice of Chaudhary, you. sir. और आप हम लोग अभी अब भविष्य में स्पर्धा परीक्षा जो होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, उसकी क्या तैयारी करनी चाहिए, पर्सनालिटी को कैसे एनहांस करना है, हमारी बोलने की स्किल को कैसे अपग्रेड करना है, इसके बारे में दुनिया में करीब करीब 40-50 लोग हमारे दोस्त हैं, जो कि दुनिया के अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूके में है, यूरोप में है. यहाँ पर बहुत सारे हमारे साथी हैं जो कि बच्चों के लिए अपना समय देना चाहते हैं. तो आगे चल के ये भी बात होगी कि फॉरेन की यूनिवर्सिटीज में किस तरीके से एडमिशन लिया जाए, स्कॉलरशिप किस तरीके से हमको उपलब्ध हो जाएगी, हमें किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब मिलाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, और कौन कौन सी क्यूएस रैंकिंग में यूनिवर्सिटीज अच्छी होती है, और ये सारी बातें हम लोग आगे चल के कराने वाले. बहुत सारे 40-50 हमारे साथी रेडी भी है. तो अभी हम लोग प्रिपरेशन के मोड में है सर. बच्चे जब तक 100 के ऊपर नहीं आ जाते तब तक हम लोग, हो सकता है हम 2 ग्रुप में भी इसको करेंगे. जैसे प्राइमरी के बच्चे होते हैं 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक, उसके बाद बड़े बच्चे होते हैं जिनको प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में सिखाना है, वो भी हम कर सकते हैं. तो उसके लिए आप अलग अलग तरीके का प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी दे सकते हो. तो आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर. और बच्चों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स लोगों को यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए बोलो, क्योंकि ये सारा कुछ फ्री में दिया जा रहा है. और जो लोग आपको एजुकेशन देना चाहते हैं वो लोग आउट ऑफ सर्विस दे रहे हैं, मतलब समाज के लिए कुछ करना चाहिए. हम जैसे आगे आए हैं, ऐसे सारे बच्चे अगर आगे आते हैं तो हमारे समाज का, अगली जनरेशन का भला होगा. यही हमारा इंटेंशन है. तो ये ऋतुज कामले, जिसको अभी आईआईटी में एडमिशन मिला है, वो अपनी स्टोरी बताएगा कि उसने पढ़ाई कैसी की, उसको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, एडमिशन कैसा होता है, पढ़ाई कैसी करनी पड़ती है. ऋतुज बेटा आ जाओ. ऋतुज अनम्यूट करके आप अपनी बात रखो. ऋतुज कामले, आप उपस्थित हो? ठीक है राजेश सर, और कोई है तो उनको बुलाइए, या और कोई सर. बात विनोद करना चौधरी चाहता है सर, कोई? आपकी हैंड रेज जो दिखा रही है वो हैंड नीचे कर लीजिए. चौधरी सर. There is a message by Ritu. Message given. या फिर राजेश सर ऐसा करो, आज जो भी नए बच्चे जुड़े उनका परिचय ले लो. बोलिए. एक एक करके बच्चे अपना परिचय दे दीजिए. संजय सोमकुंवर जी. स्थवीर भगत है. स्थवीर भगत बेटा, आप इंट्रोडक्शन दीजिए अपना. अपना नाम बताइए, कौन सी क्लास में पढ़ते हो ये बताइए, और कहाँ से हो ये बताइए, और आपको लिंक किसने दी ये बताइए. स्थवीर. Sir, my name is Sabir Bhagat. I am in class 5th A. I am living in Garchantur. Okay. And my mother name is Maya Bhagat, and my father name is Manoj Bhagat. Very good. Very nice, beta. Which class you are studying? 5th A. Very nice. Do you like this class? Yes. So you tell your friends next week they also should join this class, right? Yes, sir. Yes. Sangvi beta, introduce yourself. सर मेरा क्वेश्चन था एक. हाँ बच्चा बोलो बेटा. सर आप बता रहे थे ना क्रिटिकल एनालिसिस के बारे में, सो आई वांट टू नो कि हाउ वी डू दैट. After this, the next class, since Kirti is going to take over for the whole class,
and maybe we may join or not join, because at this point in time, me and Katke sir, how free we will be there on the next Sunday, we don't know at this time. अगर नहीं होगा, एक मिनट, अलाउ मी टू स्पीक, उसके नेक्स्ट वाले इसमें मैं क्रिटिकल एनालिसिस होता कैसे है उसके प्रश्न आपको बताऊंगा. अगर आपको 1 मिनट उसका अगर एक झलक चाहिए हो, तो मैं आपको उसकी एक झलक देता हूं. ठीक है, यू गो टू जीमैट का. ठीक है, once you go to GMAT, there is a critical reasoning section. Go to critical reasoning section of GMAT. ठीक है बच्चा? Okay, sir. हाँ, and there you will see lot of questions, mock tests. Free tests are there on critical reasoning questions. There are like 1000 PDF, 1000 ये है questions. तो बोलते हैं ना. हेलो सर, 1 मिनट, मैं वो तुमको PDF जो है, हाँ, एक मिनट, is asking my password. Wait a minute. तब तक कटके सर आप लो, मैं उस बच्ची को के लिए मैं ये लाता हूँ. Until then we will introduce the childrens. या बच्चों अभी आपका परिचय सानवी दे 1 मिनट रहना, मैं तब तक ये दे रहा Yes, हूँ. sir. Sure, sir. ये पिंकी बोध है. पिंकी बोध बेटा, परिचय दे दो अपना, क्या करते हो, नाम बताओ. Sir, my name is Tejasvi Bodh. My father name is Gopal Bodh. My mother name is Pinky Bodh. My name is Paul. Your standard. My read In in which class you are studying? 4th. My read in class Okay. 4th. Where are you from? कहाँ से हो आप? गढ़मुक्तेश्वर. Very nice, very nice, so nice. Yes, ये संजय सोमकुमार जी से आज से बच्चा अपना परिचय दे दो, आपका नाम. Sir, my name is Sanjay Somkuar. I am studying in 5th. आवाज नहीं आ रही. आ रही है सर, आवाज आ रही है. हाँ, यस. सर, मेरा नाम संजय सोमकुमार है. मैं 5th आपकी में आवाज ठीक पढ़ता से हूँ. नहीं आ रही बेटा. कटके सर बच्चे की आवाज आ रही है. आ रही है सर, वही मैं बोल रहा हूँ. कटके सर अच्छी आवाज आ रही है, आपके यहाँ कुछ प्रॉब्लम होगा. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. कंटिन्यू बेटा, कंटिन्यू. सर, मेरा नाम संजय सोमकुमार है. मैं 5th क्लास में पढ़ता हूँ. मेरी मम्मी का नाम वैशाली संजय सोमकुमार है और मैं मुंबई से हूँ. वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट. हैंडे से नेक्स्ट कौन परिचय देना चाहता है? भरत प्रताप. भरत प्रताप का हैंडे से. Sir, my name is Bharat Pratap and I study in class 7th A and my school name is Kendriya Vidyalaya Greater Noida and my father name is Mr. Sri Prakash and I am playing national games on yoga. I am national player of Very nice. yoga. वेरी and गुड. So nice, so nice. Yes, next. Next, Sir, who want to introduce? My name is Sneha Lata Kushwaha. I am class 5th Lily. My father name is Tarendra Pratap. My mother name is Sanju Kushwaha. My brother name is Yash Pratap Kushwaha. I live in a Pithampur. Very nice, so nice. Next. नेक्स्ट बच्चों आ जाओ, सामने आके बात करो, इंट्रोड्यूस करो. यस, भारत प्रताप बेटे.
अपना नाम बताइए। भारत प्रताप का हो गया सर मैंने जी कर सर, बता अतेंद्र सर। सर। जी सर, करते सर। स्नेहल कामले। Hello, sir. स्नेहल कामले बेटा अनम्यूट कीजिए, अपना परिचय दीजिए। Sir, my name is Akshara Kamble. I live at Somtana. वीडियो शुरू कीजिए। I live at Somtana and uh, I study in 10th class. वेरी नाइस। स्कूल स्कूल कौन सी स्कूल में पढ़ते हो बेटा स्नेहल? Sir, विश्व भारती विद्यालय, कहाँ पर? कारंजा। कारंजा लाड, वासिम डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। ठीक है। Yes, आपको अच्छा लगा ये सर ने जो पढ़ाया क्लास? yes, sir. यस यस। नेक्स्ट आपके बच्चा। साथ आपके बहुत सारे बच्चों को लेके ज्वाइन किया करो, सिर्फ तुम ज्वाइन नहीं होना, तुम्हारे Yes, जितने भी स्नेहल फ्रेंड्स बेटा है ना। अगले वक्त अपने दोस्तों के साथ भी, फ्रेंड्स को भी जोड़िए। yes, yes. ठीक है, चलो। सर वो बच्ची को आंसर देना था, कैन आई? यस यस, दे दो दे दो दे दो। हाँ, मैं अभी स्क्रीन ये कर रहा हूँ अपनी। आपकी स्क्रीन फ्लक्चुएट हो रही है सर, बहुत बार बार। फ्लक्चुएट हो रही है, एक मिनट, आई विल लीव एंड रीजॉइन। ओके, तब तक नए कोई बच्चा है, कोई परिचय देना चाहता है? Sir, sir, my name is Ari Ratna Gautam. I study in class 7C. My father name is Kamal Kishore Gautam, and my mother name is Babali Gautam, and I am from New Delhi, Mohammadpur. वेरी नाइस बेटा। नेक्स्ट, is there anyone who want to introduce themselves? Please come forward. My name is Urmila Rathod. कहाँ से हो आप? बाड़मेर, राजस्थान। यस। असित महाले सर, अपना परिचय दीजिए। असित सर। विजय कामले, विजय भगवान कामले जी हमारे बीच में, अपना परिचय दीजिए। देखो, आप परिचय नहीं दोगे ना तो परिचित कैसे हो गए हमारे हम सबके सर साथ? मेरे बच्चे ने ज्वाइन किया था ना, नाउ ही वेंट टू वॉशरूम। सर वो ये करना, स्क्रीन मेरी शेयर करने का मुझे अलाउ करना, मुझे वो बच्ची को ये दिखाना है। एक मिनट, होस्ट कौन है सर आज? अतेंद्र सिंह या आजाद? आजाद साहब, आजाद सर है। आजाद सर नहीं, अतेंद्र सर। अतेंद्र सर, राजेश कामले सर को को होस्ट बना दीजिए। अतेंद्र सर। हो गया सर, हो गया, कर दिया। ओके। हाँ यस। ये बहुत एडवांस लेवल का है। बच्ची कहाँ पे गई है अभी हमारी, जिसने प्रश्न पूछा था मुझे? Sir, I'm here. हाँ, अभी देखो बच्चा, यू आर एबल टू सी द स्क्रीन? Yes, sir. देखो ये जो है ना, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल्स है, बट दिस इज वेयर यू हैव टू स्टार्ट। Yes, sir. दीज आर जीमैट क्वेश्चंस, ओके? Okay, sir. इसमें एक ये है, देखो क्या आया है, दिख रहा है? क्रिटिकल Yes, sir. रीजनिंग। ठीक है? Yes, sir. In critical reason, when you take the GMAT, critical reasoning section will be interspersed throughout the verbal section. Critical reasoning questions use passages that are shorter than those in the reading comprehensions and वगैरह वगैरह, ठीक? There is a method to do this. Identify the basic structure of the argument. So याद रखना, जिसे कहते हैं premise of the statement. जो प्रीमाइस होता है, उस प्रीमाइस पे आर्ग्यूमेंट की जाती है और उस आर्ग्यूमेंट का थ्रेड जाना जाता है।
उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं X responds to Y, the phrase in bold plays which of the following roles in the argument above, और A supports his conclusion by. So ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. आपको क्रिटिकल रीजनिंग और आपकी ब्रेन पावर को अगर इंक्रीज करना है बच्चों, यहाँ जितने भी है अदर देन हमारी जो बच्ची ने प्रश्न पूछा है, दिस इज द सेक्शन. दिस विल improve your absolute critical thinking, how to draw inferences, how to explain hypothesis, because इसी के बेसिस पे पूरा premise and argument constructions and strategy to actually decode that. ये सारे assumptions वगैरह लेके एक ये होता है. This is one of the most toughest part. It takes quite some time to actually crack the understand the philosophy of critical reasoning. इतने आसान से नहीं आएगा. It will take some time, but you can beta you can call us directly if you are facing any problem in this. What I can do is, if you go and see 501 GMAT questions, sir, please be mute. 501 GMAT questions करके एक फाइल है, आप ये डाउनलोड कर सकती हो. डायरेक्टली गूगल करो and you will get that file PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करना. ओके Okay, sir. Thank you, sir. डायरेक्टली आपको मिल जाएगा and you will get access to the best of and there is one more 1 minute. Also there is one more. This is that studentbounty.com. I downloaded this test A B C D. There are 1000 critical reasoning जो है ना क्वेश्चंस. कितने 1000. मैंने अभी 1 मिनट पहले डाउनलोड किया है. papers draws .extremepapers.rs ऊपर दिख रहा है. Yes, sir. हाँ, उसका फोटो ले लो और यही डाउनलोड कर लो तुम्हारे यहाँ से, या इससे भी कर सकते हो. ये जो है ना ये दिस आई कैन पुट इट ऑन योर चैट बॉक्स. इसको डाउनलोड कर लो. Okay, sir. ओके, इज दैट क्लियर? Yes, sir. Thank you, sir. चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, जस्ट ले लो. ओके, Thank you very much, sir. हाँ, अभी इसके ऊपर हम बाद में स्टडी करेंगे, नॉट नाउ, बिकॉज दैट्स प्रीटी टफ. इट्स नॉट दैट इजी एंड द चिल्ड्रन विल नॉट अंडरस्टैंड दैट. मे बी यू विल अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ योर एज, बट नॉट द अदर्स. ठीक है, टू यू कटके सर. हाँ, किसी को कुछ बात करनी है बच्चों? किसी को कुछ गाना गाना है, एक आधी पोएम बतानी है, या और कुछ कहना है, इंट्रोडक्शन करना है, तो अभी बस टाइम हो चुका है हमारा. अभी 1-2 मिनट में हम लोग खत्म कर देंगे, ये बंद कर देंगे लिंक. आपको किसी को कुछ बात करनी है तो बोल दो. इट इज ओपन फॉर ऑल ऑफ यू. Excuse me, sir. यस बेटा. Sir, I have a suggestion. Can I give? यस प्लीज. सर मतलब कि जैसे कि क्लासेस तो होती रहती हैं. आई वांट कि किसी एक दिन इवनिंग के टाइम पे कोई एक टॉपिक को लेके इंग्लिश में ही डिबेट या कुछ ऐसा कुछ बातें हो, क्वेश्चन आस्क हो. ये सर बता रहे हैं क्रिटिकल एनालिसिस वाले से, सर ने बताया. तो ना क्रिटिकल एनालिसिस ना हो कि किसी एक टॉपिक पे इंग्लिश में डिबेट हो. यस. Your suggestion is very nice. We'll think on it. Okay, sir. Are you going? और किसी को बात करनी है बच्चों? Yes, Yes. No. no, sir. Doyle, please. Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, Mami. चंगा नवामी बेटा. सत्येंद्र सर. I am studying fifth class. Yes, sir.
यस सर। जी सर, अभी टाइम हो चुका है तो अपनी बंद कर देते हैं। सर वो एक्चुअली वो सभी सुनीता सर को का थैंक कंसर्ट यू होने वेरी वाला मच। है। और अगले हफ्ते को 11 बजे डॉट डॉट 11 अगले संडे को आप सभी को जुड़ना है, और अपने जितने भी फ्रेंड्स होंगे उन फ्रेंड्स को भी जोड़िए, उनको कहिए कि यहाँ पर बहुत अच्छी बातें होती है। और ये आपको इसीलिए उपलब्ध कराया जा रहा है बच्चों, क्योंकि आपको आगे जाके क्या करना है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा नॉलेज है स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, या फिर प्राइवेट क्लासेस होते हैं वहां पर फीस ली जाती है। यहाँ पर सारी सुविधा आपको मुफ्त में दी जाएगी। और ये यहाँ पर जो बड़े अच्छे अच्छे बच्चे आएंगे जिन्होंने आईआईटीज में, आईआईएम्स में, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लिया, उनकी स्टोरीज भी बताई जाएगी और अलग अलग तरीके की शिक्षा आपको दी जाएगी। तो अगले हफ्ते ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन कीजिए। ठीक है बच्चों, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, संघं नमामि, जय संविधान। संघं नमामि। जी सर, अत्यंत सर प्लीज। संघं नमामि बेटा। जी सर।